देखिए, हम लोगों का अब तक हो गया था। तो अब हम डिस्कस कर मतलब कल मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उसका अगर इंटीग्रल निकालना है। इसमें मैंने यहाँ डिफाइन किया, सबसे पहले आप डिस्प्ले लेटेक टाइप करें ताकि आपका जो भी आउटपुट आए वो सारे आउटपुट जो हैं वो लेटेक वर्ड में आए। तो सबसे पहले आपने इसको कर लिया, फिर उसके बाद सर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है where the fx is equal to 1 upon exponential x minus 1 के पावर 2। तो इसको आप शो कर सकते हैं, शो के बेस पे ये वैल्यू दी जाएगी ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में। एंड द इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप जैसे ही शिफ्ट और एंटर करेंगे इवेलुएट हो जाएगा आपका 1 अपॉन इफ द फंक्शन 1 अपॉन ई पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड द इंटीग्रल पार्ट इज एक्स माइनस 1 अपॉन ई पावर एक्स माइनस 1 माइनस लॉग ई पावर एक्स माइनस 1। ठीक है। अगर आपको देखना है कि इंटीग्रेशन में क्या क्या पार्ट है, तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि इसमें पूरा लिखा रहेगा आपको, जैसे कि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन को आप इंटीग्रल करना हो तो उसके वे लिखे होंगे। आप यहाँ से कोड टाइप करके भी, कॉपी एंड पेस्ट करके भी देख सकते हैं। तो आप इवेल्युएशन कर, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है y इक्वल टू वेरिएबल ऑफ y एंड द इंटीग्रल साइन x इन y and the y sin x variable, because the sin x is the constant for where the variable is y, not sin x. So sin x is the constant that value, तो y sin x आ जाएगी, क्योंकि sin x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। और ये इंटीग्रेशन वन का जो होगा वो आपका y हो जाएगा। एंड ऑल्सो द इंटीग्रल साइन एक्स का आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और लिमिट जो रखे हुए हैं 0 से π/2, तो वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अनदर वे से भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड फर्स्टली इन साइन एक्स डॉट इंटीग्रल एक्स 0 से π/2। सेम वे, मतलब बस लिखने का तरीका आपका थोड़ा अलग है, लेकिन आप वैसे भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपको इसमें बहुत सारे कंडीशन के थ्रू आपको मिल जाएगा कि आपको टाइप कैसे करना है, न्यूमेरिकली सोल्यूशन कैसे अवेलेबल करना है, मतलब फंक्शन आप डिफाइन करके यहाँ से भी वैल्यू आप काम कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन किया है जी एक्स इज इक्वल टू 1 + log x फॉर 4 और अपॉन एक्स एंड जी एक्स, और इंटीग्रल मैंने किया हुआ है जी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, बट लिमिट रखी हुई है 1 से 2। तो आपको ये वैल्यू मिल गई। बट अगर आपको मान लीजिए log 2 जो है वो फंक्शन नॉर्मल फॉर्म है, आप इसको अगर न्यूमेरिकली करना चाहते हैं, जैसे डॉट एन अगर ऐसे आप कर देते हैं, तो सेम वैल्यू है न्यूमेरिकल फॉर्म, तब न्यूमेरिकली वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ असल में कभी भी साइन इनवर्स टाइप करना हो, तो आप तो या तो आर्क साइन एक्स टाइप कर सकते हैं या सिर्फ ए साइन एक्स टाइप कर सकते हैं। इसका मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स। ए साइन एक्स का मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 - x² के पावर 3/2। देन एच एक्स एंड इंटीग्रल एच एक्स फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, और लिमिट मैंने रखा हुआ है 0 से 1/√2। √2 लिखने के लिए हम √2 लिखते हैं, बट मैथ मॉड्यूल फॉर्म। एंड देन न्यूमेरिकली, अगर न्यूमेरिकली नहीं करना तो आपको ऐसे लिखिए, वैल्यू ऐसे आ सकती है। आप इसका चाहें तो न्यूमेरिकली सोल्यूशन करते हैं बाई यूजिंग द डॉट एन, ऐसे करते हैं। And the next function fx equal to 1 upon root 5x square plus 6x plus 8, and the fx is equal to fx is the function type, and the integral fx gx 0 से 1। और आप ऐसे करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1 √5/5 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 8/31√2 -1/5 रूट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इन द थ्री वैल्यू। आप इसको न्यूमेरिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैंने एक न्यू फंक्शन बना दिया है, इस द स्क्वायर रूट यानी √4 - x इंटू एक्स माइनस 3, जबकि एक्स इंटीग्रल मैंने 0 से 1 रखी हुई है। ये भी आप इजीली इवैल्यूएशन कर सकते हैं। दैट नंबर इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो आप इसको भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं, आप नॉर्मली बेस पे भी और वैसे भी लगाइए। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एफएक्ट फंक्शन आप चूज कर सकते हैं और फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। और न्यूमेरिकली सॉल्यूशन के लिए आपको डॉट एन
लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको वैल्यू जो होता है वो न्यूमेरिकली आ जाता है। मैंने यहाँ लिमिट रखी हुई है 0 से 100। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आएगी, इसको आप न्यूमेरिकली कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे आपका यहाँ मैंने लिख के लिखा हुआ था कि डिफाइन द वेरिएबल इन द वेरिएबल एक्स and define the integrand fx equal to 1/1 minus 4 cos x plus 16। तो आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं 0 से पाई के बीच में, ये वैल्यू आ जाएगी। चाहे तो न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। इंटीग्रल आई थिंक आप लोगों से हो जाना चाहिए, मैंने कल भी डिस्कस किया था। एंड अब देखिए दूसरा मैंने ये भी कल डिस्कस किया था, बीटा एंड गामा फंक्शन। कि बीटा पर गामा फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। फर्स्टली द वेरिएबल एक्स का मान and the integral e power minus x x power n minus 1 integrate by x then the minus gamma nx। मैंने लिमिट इम्पोज नहीं की है, तो बेसिक डिफरेंशियल अभी इंक्लूड नहीं किया हुआ। देन इंटीग्रल e पावर माइनस एक्स एक्स पावर n माइनस 1 x 0 x एंड लिमिट इज 0 से इनफाइनाइट देन द गामा n। आप बेसिकली गामा को आप प्लॉट भी कर सकते हैं कि गामा 0 से 1 के बीच में गामा 1 की वैल्यू किस तरीके से आएगी। आपका ग्राफ ऐसे आएगा, तो आप यहाँ ये भी प्लॉट कर सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में आपकी ग्राफ कैसे आती है इधर गामा फंक्शन की। गामा के डायरेक्ट लिख आप किसी भी वैल्यू को इवेल्युएशन, जैसे 4 है 5 है 6 है, जैसे आप इवेल्युएशन करना चाहते हैं। मान लीजिए 100 इवेल्युएशन करना है तो इसकी भी वैल्यू दे देगा। अभी बहुत बड़ा दे रहा है तो आपको इसको थोड़ा सा कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पावर फॉर्म द 10 पावर 155। इस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हैं। एंड द डिफाइन फॉर द वेरिएबल एक्स एन और म्यू, and then the assume n is greater than 0 and the mu is also greater than 0, then fx equal to exponential minus mu x into the x power n minus 1, then the integral fx comma x। आप इसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप इसको द प्रॉपर्टीज ऑफ द गामा फंक्शन। ठीक है। एंड आल्सो द इंटीग्रेट द ई पावर माइनस एक्स एक्स पावर माइनस 1 अपॉन द गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है 0 से इनफाइनाइट के बीच में, दैट वैल्यू इज √2। ठीक। और नेक्स्ट थिंग द वेरिएबल m comma n and define for the m greater than 0 and also the assume n greater than 0, then fx equal to sin x power m into the cos x power n 0 से π/2। that evaluation the beta function, the 1/2 beta m plus 1/2 and the n plus 1/2 plus also the relation आप इम्पोर्ट कर सकते हैं गामा फंक्शन में। विद द वेरिएबल आप चूज कर सकते हैं, जैसे सिंपली विद द वाली फार्मूला एंड द sin x पावर m या sin x पावर n जैसा चूज करना पसंद करें। देन एफ एक्स और 0 से π/2, तो आपके वो बीटा के फंक्शन के रूप में वैल्यू देगा। ये तो मैंने बीटा फंक्शन ही डिफाइन कर दिया था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। एंड द बीटा 1 इज द बीटा एस। राइट, तो यहाँ तक आई थिंक बेसिक प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर नेक्स्ट थिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द SageMath। What is the ordinary differential equation? Simply an ordinary differential equation. That equation is that type of equation involving the derivative of the function with respect to the single independent variable. And when the partial differential equation, then the differential equation involving the derivative of the function with respect to more variable, independent variables than the partial differential equation. And the first order of ordinary differential equation is nothing but dy by dx equal to fxy. Yeah, another form is the m dx plus n dy. And the second order ordinary differential equation, the general form d2y upon dx square plus p dy by dx plus qy equal to r, where the p, q, r are the function of the x. And the general form of any ordinary differential equation, this is the x, y, first derivative, second derivative, and the nth derivative. Then the n order differential equation defined. As a simple example, the dy by dx the equal to x square plus y
तो आप यहाँ मैंने डिफाइन किया तो whether x is the variable of x and the y is the function of yx and the ordinary differential equation, thus the name and the differential equation and the differentiation y comma x इक्वल टू साइन के लिए डबल इक्वल साइन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई देन सो द इक्वेशन इसमें डी बार के बेस पे नहीं लिखता द वन डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे डेल बाय डेल एक्स अब सॉल्व करने के लिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन एनालिटिकली विद यूजिंग द डी सॉल्व टू फाइंड द सिंबॉलिक सॉल्यूशन सॉल्यूशन आपने फंक्शन ऊपर डिफाइन किया होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से है उसका फॉर्म एंड द डी सॉल्व ओडी किसके रिस्पेक्ट में करना है तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है देन सो तो आपको यह मिल जाएगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से है एंड पुटिंग द इनिशियल कंडीशन दैट द y is 0 = 1 देन 0, 1 देन वैल्यू तो आपका जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इवैल्यूएशन हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ये फंक्शन आपका आया हुआ है जैसे -x² -2x + 3x 3e⁻x -2 then the मैंने डिफाइन किया वेरिएबल ऑफ x एंड द yx फंक्शन इज डिफाइंड जो यह सॉल्यूशन आया हुआ है एंड सो दैट द yx and the yx so the x limit is the -1 to 1 then the plot आप फंक्शन को वहाँ प्लॉट भी कर सकते हैं आप लिमिट और ज्यादा भी रख सकते हैं ऐसे आपको ग्राफ मिल जाएगा या बहुत ही कम रख के चेक करिए ये 0.1 का विजुलाइजेशन अच्छा हो जाता है ये आपको ग्राफ मिल जाएगा और इसकी वैल्यू भी आप 0.1 करिए या आपकी ग्राफ मिल जाएगी दैट नॉट ए स्ट्रेट लाइन या वैल्यू इस तरीके से कम इवैल्यूएशन की बेस पे इस तरीके से दिख रहा है आप बेसिक 0.6 इस तरीके से आप चूज करके प्लॉट भी कर सकते हैं आपका जो सॉल्यूशन आया हुआ है अलग अलग डोमेन वाइज इंटरवल वाइज आप रिकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एंड द सॉल्यूशन पार्ट द डी सॉल्व फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन differentiation in the first order differential equation first order the differentiate in the dff in the yx and the equation is d by dx of y is equal to the x into 2 log x plus 1 upon sin y plus y cos y and the differentiation in the y के बेस पे मतलब आपको solution y के रूप में चाहिए y is the dependent variable x is the independent variable in that differential equation then the limit initial condition is that is the 0, 1 then the solution for that तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी this is the sin yx and the yx equal to x square log x plus sin 1 because I already included the initial condition ठीक है तो आई थिंक यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड द नेक्स्ट थिंग इज द another differential equation is the variable of x the y equal to function yx in the solution we solve x square differentiation is equal to that the two part second order differential equation that the x square d2y upon dx square because the two order के respect में y x comma 2 that is d2y upon dx square of y into the plus x dy dx of y plus y is equal to x square the respective solve there are the two because the second order then the k1 or k2 is the two arbitrary constant then solution part is आप डिफाइन कर सकते हैं the initial condition are available then the k1 k2 are defined आप evaluate कर सकते हैं by using that it is as similar to the 0 1 मान लीजिए मैंने यहाँ putting किया है that the 0, 1, 2 that we what the call here log 0 are not defined okay the one fourth then value evaluation
देन वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि एक्स जीरो और रखा है, तो ये फर्स्ट इनिशियल कंडीशन 1 4, यानी y1 इक्वल टू 4 एंड y4 इक्वल टू 2, देन वैल्यू। आप ये आपको इस तरीके से आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी इवैल्यूएशन करो जिससे आपकी कंडीशन गिवन हो। Then the next thing is the second order differential equation is a first order differential equation में फिर से लिखेंगे हुआ है। With the variable of x, the y is the function of yx, the solution part मैंने बस basic solution word लिख लिया है। Because the d solve with the 3xy, d solve by using the ordinary differential equation solving. 3xy is equal to 2 with the into the dy dx into the x square. Minus 2 differentiation y comma x and the initial conditions are also included in solution. तो ये solution देंगे। आप ये condition जब नहीं रखेंगे तो the solution part is that the basic, not exponential way, but the condition are available is the 4 comma 5 that। इस तरीके से आप evaluation भी कर सकते हैं। Next thing the partial derivative and the partial derivative part, तो basic partial derivative डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए लेट जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई with the function the two variable function of two variable के बेस पे the partial derivative of the f with respect to x at the a comma b is defined as the limit x tending to a f x comma b minus f a comma b or x minus a. The del f or del x at the point a comma b and the provide this limit exists. And the del f or del y comma a comma b the limit y tending to b f a comma y in the f a comma b then y minus. First think include the function in the variable x y z comma t। मैंने डिफाइन कर लिया था t के भी नीड तो नहीं है लेकिन मैंने डिफाइन कर दिया था। एफ एक्स वाई इक्वल टू 4x y एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन द a comma b, यानी a और b की जो मैंने वैल्यू रखी है 0.1 comma 1। मैंने सबसे पहले मैंने फंक्शन को इवेलुएट किया तो आपको ये से इज आल्सो इंक्लूड द डिस्प्ले डिटेक्ट। तब ये आपका उस पूरे होल आउट आपको नॉर्मल लिखने के बाद भी आपकी वैल्यू द लेटेक फॉर्म मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में द क्लियर। एंड द प्लॉटिंग पार्ट इज द 3D, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई द 3D प्लेन में अगर आपको इसको प्लॉट करना है द एस इज इक्वल टू प्लॉट 3D। और ये एफ एक्स फंक्शन एक्स वाई एंड द एक्स इज द वैल्यू -2 से 2 and the y is also -2 से 2। it's the opacity part that part and the जिससे आपने इवेलुएट किया ये आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं आप and when I change the opacity part to 0.8, ठीक है, that is the changing and also the मान लीजिए approx the 10 part the whole part पूरा full हो गया then तो आपको नॉर्मल लिखना है भी 1.0.6 that part। And the next thing is point plotting for the that the point a comma b the 1 comma 1 और the f 1 1 की वैल्यू कहाँ होगी then the red sign are represented। तो मैंने यहाँ पॉइंट साइज रखा है 20, आप बदलेंगे तो आपको बड़ी साइन में भी दिख जाएगा ये वैल्यू। दैट इज द पॉइंट साइज। साइज के बेस पे डिफाइन हुआ है आप लेकिन नॉर्मल रेट पे भी कॉक्स 50 कर दीजिए दैट। So your point size plotting over the plane plot is the implicit plot part, the plane plot. Y is equal to b, and y equal to 1, and the x is 0 say 2, because the a minus 1 is the a is the 1, 1 minus 1 0, 0 say 2, and the b is also 0 say 2, y is also 0 say 2. Then plot is the z axis, this is z plane bit. And the f a comma b minus 1 or f a comma b plus 1 adding third। Okay, and the color is the size c by n and the opacity is the 0.4
is also included in that the plane of that part, is a plane part implicit plot 3D and the y equal to 3. Okay, y equal to 1 ये plot है आपका plane का. Okay. Then the next is the parametric plot, already discussed about. Then the t comma b is the f t comma b, the t जो मैंने ऊपर define किया था variable part, and the t a minus 1 a plus 1 the kilometer ground thickness, that part. ये आपका हो गया इसका इधर parametric plot 3D. After the plotting, the whole part are added, then graph. मैंने पॉइंट साइज जब इंक्रीज कर दिया तो उसके बेस पे C1 is not defined. तो C1 is defined that. तो ये आपका कंबाइन ग्राफ है जो प्लेन के बेस पे आया हुआ है और ये आपकी पॉइंट है जो उस प्लेन के बेस पे यहाँ आपको प्रिडिक्ट दिख रहा है. ठीक है. Then the how does one find the derivative in the variable x comma y in the function defined for the x into y upon x plus y. Then the first differentiation, the del f upon del x, then the fx, f differentiated the one part is the x, then value is the fx, यानी del upon del x की जो value आएगी, then the y upon x plus y minus x, y upon x plus y का square, then the fy is equal to either differentiation or del f on del y, then the f dot differentiation y, the value the del f on del y, the x upon x plus y minus xy upon x plus y square. The basic thing in the higher order partial derivatives is just think del f upon del x, del 2 f upon del x square, del 2 upon del 2 f upon del x del y, and the del 2 upon del y square, and also included. So as think the 4xy exponential minus x square minus y square. Then fx is equal to f differentiation of x. And the one del f on del x is the function x के respect में differentiation, then the value. And the two times are differentiation. तो या तो x का मतलब लिखिए या तो यहाँ x include कर दीजिए. This is also defined in the same value. ये मैंने function define नहीं किया हुआ है that and the two times that the value. और also the same value that including the two part. अगर मान लीजिए del q wave from del x cube, then you put the three parts is also differentiation correct. तो आप easily evaluate कर सकते हैं. And the next thing is the del f on del y in the fy is the del f on del y the value f dot differentiation in the with respect to the y and the two times. Here are also included fxy is the own way is way the fx dot differentiation of y, यानी fx function already are defined, then differentiate the y respect पे तो उस function का आप ऐसे निकाल सकते हैं. And also that the function f dot differentiation x comma y, यानी firstly differentiate for the x fin and the y, the when the differentiate of the x with respect to the differentiate to and the y is the constant. And the next thing is the y differentiation part in the x is the constant in same way. There are two ways, another way is defined part. And the next thing is the variable x, y, and the fxy x cube y minus x y cube and the x square plus y square. For the limiting part, there's a limit, iterative limit, define the repeated limit part. The limit till limit is the limit fxy in the x tending to 0. And if firstly this function defined for the limit x tending to 0, and the next value आ गई उसके बाद से limit y tending to 0 after that function, then value is 0. And the reverse इसी का just reverse part is the firstly the y tending to 0 and the next in the x tending to 0, that value. That function is the fx
y, the differences in x and y and the evaluations साथ में आप इसको evaluate करें. This is the del f on del x y, that what del f upon del x y, uh, del f upon del x and the del f upon del y part, and also the f x y in the del f on del 2f on del x, del x y, and the next thing is the y x in the f x y in that part. अब यहाँ भी ए भी चीज आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं दैट फंक्शन टू वेज में डिफाइन. And the checking for the other continuous function fx del 2f upon del x del y equal to del 2f upon del x del y del x are equal, then the bool part is the true, is the correct. And this value is the same. And the next thing is the variable x comma y in the value tan inverse y upon x minus 1 and the minus tan inverse y upon x plus 1, then the value. This function is defined, and also evaluation is directly the two part del 2f on del x square and del 2 part. We checking about the either Laplace equation del 2f on del x square plus del 2f upon del y square is a true or not, then defined part is the true. And also the when the defined for the function is the f r comma theta, the polar coordinate way, the f r theta in the r square exponential minus theta, then evaluation, and the f for is defined and the f theta is also defined. So I think is it clear? Any question?